So hello everyone, today we have once again Hakirat here. He graduated from IIT Roorkee in the last 4 years and abhi he will be sharing the reality of IITs कि IITs में अगर कोई पहुंच जाता है क्या difference होता है 4 years later if you're from an IIT versus not an IIT and how he was able to get multiple crore job after graduating and he was able to become a remote software engineer. आप up to 4 crores मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप 4 crores इंडिया में कमा सकते हो. मैं तो यूएस में भी नहीं सोचा था that he was able to make it in India itself. And we will get to learn more about remote software engineering jobs from him. So hi Harkirat, can you please introduce yourself? Yeah, hi Harnoor. Thanks for having me on the channel again. I think this is our second podcast, so great to be back. As you mentioned, I graduated in 2018, computer science. I did a year and a half at Goldman after that. That was my campus placement. Uske baad, I had some medical issues, so I had to move back home. I was basically called back to the office, but एक महीना medical leave फिला, 2 महीने रहा, फिर I basically could not go back. So I ended up moving back home. मैं यहाँ मोहाली से हूँ. This is where I did my sort of bachelor's, JEE preparation, and so I just moved back home at my mom's place. And फिर यहाँ जब मैं आ गया था, COVID was just starting out, so I didn't really have any jobs, so I started looking for remote opportunities, and then I freelanced for a year, which basically means like working for multiple companies here and there. And then after a year, I cracked the 4CR offer that we were just talking about. I worked for a US-based metaverse startup for like a year. I waited for my cliff to end and my equity to vest after a year, and then after that, I sort of felt like I have to do other things. YouTube पीछे छूट गया था बहुत ज़्यादा. So I started YouTube recently. I still work elsewhere, so that's been my journey, मोटा मोटा. तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम योर फर्स्ट ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी. तो आपको जो गोल्डमैन में पोजीशन मिली उसका क्राइटेरिया क्या होता है आईआईटीज में? आपको मिनिमम जीपीए चाहिए होती है, जैसे कि नॉर्मल कॉलेजेस इन इंडिया उन्हें एक मिनिमम जीपीए, एक एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है कभी कभी. तो व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ ऑन कैंपस जॉब्स एट आईआईटीज? हाँ, तो आई थिंक दिस चेंजेस वेरी क्विकली, बट बैक देन व्हेन आई वाज ऑन कैंपस, तो ऑन डे जीरो जो कंपनीज आती हैं, विच इंक्लूड्स कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गोल्डमैन सैक्स, अमेजॉन, तो इनका यूजुअली रहता है कि दे पिकअप पीपल फ्रॉम द टॉप 3 ब्रांचेस, यूजुअली नो CGPA क्राइटेरिया. और अगर कोई बहुत ही तोड़ कंपनी आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल इन माई ईयर टावर रिसर्च वॉज दैट कंपनी, कि उन्होंने CGPA क्राइटेरिया भी लगा दिया था, विच वॉज लाइक 7.5 और समथिंग. So basically, if you're not from a core one of the top 3 branches, या तुम्हारा CGPA कम है, तो it can affect you on day 0. उसके बाद थोड़ा चिल होता जाता है. And after that, of course, there's a screening test जो बैठ के तुम देते हो in like a lab, जिसमें तुम्हें ऑनलाइन कोड करना होता है and everything. So that's the second screening. And after these 2 screens, basically, you were able to sit for an on-campus placement, which is like an on-site. तुम्हारी कंपनीज आती है ऑन साइट, उनके मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स दे कम टू द कैंपस, एंड द पीपल हु हैव बीन स्क्रीन्ड डे 0 पे टॉप वाले बच्चे बैठते हैं, फिर जिनका उनमें नहीं होता वो डे 1 पे जाते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो देयर इज नो स्कोप ऑफ चीटिंग. आपको यकीन नहीं होगा, अभी ट्रेंड पे सिंस कोविड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स के लिए जाना, चीटिंग इतना बड़ा ट्रेंड था बिकॉज एवरी पर्सन लाइक एक एजेंसीज है यूएस में, इंडिया में, विदाउट टेकिंग एनी नेम्स आई कैन टेल यू कि वो एजेंसीज आपके कोडिंग एग्जाम दे देती हैं एंड बाद में वो बच्चे स्ट्रगल करते हैं कंपनीज में जाने के बाद अगर वो पहले चीटिंग करके चले जाते हैं. सो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, राइट? No, there's a decent scope for cheating. As I said, these are online examinations. So, क्योंकि तुम एक लैब में बैठ के दे रहे हो, you can easily copy paste your code and send it to your friend. Also in IITs, there's an IIT doc जो हर साल बनता है. So Flipkart came to कानपुर. कानपुर में जो क्वेश्चन आए थे वो उस डॉक पे डाल देते हैं, एंड यूजुअली समटाइम्स these questions are repeated. तो अगले दिन जब रुड़की में आई वो सेम टेस्ट लेके आ गई, तो पीपल ऑलरेडी नो द सोल्यूशन. सो इट्स वेरी कॉमन टू चीट इन दीज एग्जामिनेशंस. ओह माय गॉड. क्योंकि इंडिया में आपको पता है जैसे कि ये स्कैम्स, बहुत चीटिंग वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है इन लॉट ऑफ सिटीज़ लाइक हैदराबाद, बैंगलोर. तो वहाँ पर ये बहुत चीज़ें होती हैं एंड वहाँ पे तो बड़े बड़े बोर्ड्स पे लिखा होता है कि आओ हम आपका कोडिंग टेस्ट इनफैक्ट आपकी हेल्प करेंगे और सीक्रेटली क्लियर भी करवा देते हैं. तो दैट इज़ द हार्श रियलिटी. इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट जॉब एट गोल्डमैन, आपको पता है कि एवरेज पैकेज जब भी कोई बच्चा आईआईटी सुन के जाता है वो करोड़ों का पैकेज सुन के जाता है. तो आपने गोल्डमैन सैक्स की जॉब इंडिया में की थी एंड इफ़ यू फील कंफर्टेबल कैन यू शेयर इन नंबर्स द एवरेज पैकेज एट द टाइम कि वाकई में क्या करोड़ों में होता है एंड आपका कितना लगा था? So I think this has changed again very recently. Now people, from what I know, actually make close to 1 CR in India as well, if you're from an IIT, in a few companies. Back then, I think best offer was Tower Research ka. They were paying around 40 LPA. Goldman specifically, where I went, was paying 31. 21 उसमें base था, 7 लाख का bonus था, and 3.5 lakh was a joining bonus.
after taxes, around 1.3 lakhs would hit my bank account every month. And year end पे I would get that bonus. तो वो 7 lakhs का कट के 5 लाख के आसपास bonus आता था. That's sort of common in my batch. I think India में जो लोग place हुए थे, at least right out of college, that's what you make. And करोड़ों का पैकेज लगा था, but US में लगा था. तो my friends who made it to Microsoft was one company that was offering an international offer back then. 3 लोग गए थे. And their package was I think 150K, which is like 1 CR, या उससे maybe थोड़ा सा ज़्यादा. But they went via Canada. So they don't directly go to the US because of visa reasons. They first have to go to Canada, work there for a year and a half, and वहाँ पे offer और कम होता है. So उनका purely based on location है कि तुम्हारी Microsoft में लग गई है, जो इंडिया में लगे उनको X मिलेगा. अगर तुम वाया कैनेडा आ रहे हो, जब तक तुम कैनेडा में हो तब तक तुम्हें Y मिलेगा. फिर तो तुम when you land in the US, then you get your actual 150K, 200K offer that was promised. तो it was at least back then very location specific, and now I think there are some quant companies in India and Europe जो कि 1 CR plus actually IT वालों को देते हैं. actually में 1 CR होता है. And I think as I said, remote work probably has accelerated that because people now have opportunities. They can directly work for companies in the US. So Indian big tech will have to compete with them, and I think eventually this arbitrage will close, and like there'll be a common standard of what people in tech make. And I don't think 1 CR is huge for a college graduate if they're very good. And baki, I think half of that, 50 lakhs, you can easily make irrespective of IIT or not. But IIT में तो probably you can easily make that much. Oh, that is very similar to what we make in the US. आपको यकीन नहीं होगा. In fact, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका वीज़ा नहीं लग रहा था इन टॉप कंपनीज है गूगल, फेसबुक, टेस्ला. उन्हें भी कनाडा की ऑप्शन दी जाती है कि कनाडा में आप एक डेढ़ साल जाओ अगर आपका H1B नहीं लग रहा है, एंड देन कम बैक, एंड द नंबर्स आर प्रीटी सिमिलर. सो एज यू मेंशन्ड अबाउट द IIT ट्रैक, डू यू थिंक इट हेल्प्ड यू in getting jobs? First of all, remote software job, including Goldman Sachs. अगर आप IIT से नहीं होते तो आपको मिल सकती थी ऐसी पोजीशन. बिकॉज आपको मैं बताता हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं जो PhD कर रहे हैं. आई वेंट टू MIT, मैंने जॉर्जिया टेक, हर जगह से मैंने जितने भी PhD मास्टर स्टूडेंट्स को इंटरव्यू किया. आपको यकीन नहीं होगा, दे वर सो ऑनेस्ट. उन्होंने बताया कि अगर वो IIT से नहीं होते, उनके पास एक पेपर था टू गेट इनटू PhD मास्टर्स, अगर वो IIT से नहीं होते, उनके लिए MIT या फिर टॉप जॉर्जिया टेक जैसी यूनिवर्सिटीज़ में PhD करना नामुमकिन था. बिकॉज उन्हें नॉर्मल यूनिवर्सिटी से टॉप जर्नल लेवल पेपर लिखने पड़ते. बट क्योंकि वो IIT से उन्होंने कॉन्फ्रेंस लेवल पेपर लिखे, कॉन्फ्रेंस पे जब आप प्रेजेंट करते हो तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है. टॉप जर्नलिस्ट की आप टॉप पब्लिकेशन में जा रहे हो, कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट कर रहे हो. सो दैट वाज द ह्यूज डिफरेंस दैट they were honest कि IIT is a big advantage. क्योंकि US में अगर कोई बच्चा किसी कॉलेज से आता है, अगर वो कॉलेज इमीडिएटली क्लिक कर जाता है अगर वो IIT होता है, बिकॉज IITs के एलुमनाई से बहुत फोड़ा हुआ है. सो दैट रियली हेल्प्स इन PhD प्रोग्राम्स इन द US. सो व्हाट डू यू थिंक, वेयर IIT टैग हेल्प यू, एंड अगर नहीं होता तो आप कहाँ पे होते? राइट. सो आई स्टार्ट फ्रॉम Goldman. At least मेरे में ऐसा था कि they would pay separately based on whether you're from a tier 1 college or not. So that includes IITs, NITs, DTU colleges like these. I don't think it happens anymore. I don't think there's a reason for it to happen. A lot of times local college जो भी tier 2 tier 3 कॉलेज के बच्चे थे तो ज़्यादा फोड़ते थे ज्वाइन करने के बाद. और वो इतना अजीब हो जाता है कि एवरीवन नोज, मतलब ये सबको पता होता है कि हाँ ये IIT वाले इनका X पैकेज लगा है और जो नॉन IIT वाले उनका Y पैकेज लगा है. तो और वहाँ जाके वो फोड़ते हैं, फिर भी उनका पैकेज कम है, 1 साल से पहले इंक्रीमेंट नहीं आती, तो बहुत अजीब सा सिनेरियो हो जाता है. सो इट डज़ हैपन, डजंट हैपन इन अ लॉट ऑफ कंपनीज. आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट और बिग टेक में नहीं होता. एटलीस्ट गोल्डमैन में ऐसा था इनिशियली. मे बी इट इज़ चेंज नाउ. So Goldman में I don't know if getting in helped because there were a lot of people from other colleges, but specifically the package ended up mattering because they purely based on your college will pay you more or less. So that's Goldman. उसके बाद I did apply for masters as well. I don't know if you know this, but pre-COVID, before I had the medical issues, I gave my GRE and I applied to around 10 universities. I got into 2. So उधर I would say it may have mattered. Again, I applied to 10, got into 2, so maybe I wasn't the best. I'm not the best person to comment on this. And I ended up not going for a master's. But from what I've heard, yes, masters में profs usually know what IITs are, and that's just because based on the trend कि उनके बहुत सारे बच्चे IIT से होते हैं तो उनको पता होता है कि कॉलेज है, and hence they sort of are a little bit partial. But I can't comment much on it. But if, as you said, maybe that is the case. अगर since you've talked to people who are currently pursuing masters and PhDs, it's totally possible that there is some sort of partiality. But as you mentioned, if you're really good at something, right? If you've written a conference paper, then your college won't end up mattering. But yes, for the average lot, if 2 people are exactly the same, then if you're from a better college, of course, you'll get some advantage. Remote jobs.
रिमोट जॉब्स का ऐसा है कि नो वन नोज, एटलीस्ट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन you're applying, you're either applying to a very small company, sometimes even an individual who just wants to try a startup, or like a startup that's like seed funded or series A funded. तो इतने छोटे लेवल पे यूजली फाउंडर्स को वहाँ के को नहीं पता होता आईटी क्या है. एंड यूजली वन यू सॉर्ट ऑफ ऑल्सो इंटरव्यू, यू नो, तुम्हारे रेज्यूमे में कुछ होता है जो उनको देख के अच्छा लगता है, विच इज़ यूजली नॉट आई आई टीज, इट्स नॉट यूजली द कॉलेज और द CGPA. सो आई थिंक रिमोट जॉब्स में इट डजंट मैटर एट ऑल, प्योरली बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड कॉलेजेस इन इंडिया. दे डोंट, उनको नहीं पता, मे बी अगर तुम MIT लिखाओ तो मैटर करता है, बट IIT फ्रॉम माई एक्सपीरियंस दे डोंट नो मच अबाउट IITs. टोटली एग्री. इन सम प्रोग्राम्स लाइक मास्टर्स PhD ये मैटर ज़रूर करता है, पर मास्टर्स में भी इतना ज़्यादा नहीं करता, पर PhD में बहुत ज़्यादा करता है. बट एज यू सेड कि रिमोट जॉब्स में आपके पास ब्रांड्स थे लाइक Amazon, Google एंड लाइक Microsoft. वो ब्रांड्स आई थिंक वो सबसे ऊपर थे आपके रिज्यूमे में, जैसे आपने रिज्यूमे वाले वीडियो में दिखाया था. सो आई थिंक दैट डेफिनेटली पेज मोर वेटेज फॉर रिमोट जॉब्स, क्योंकि रैंडमली किसी कंपनी को पता नहीं होगा कि वो किसे हायर कर रहे हैं. वो उन्हें सिर्फ US बेस्ड कंपनीज का पता होगा, क्योंकि वो US में है एज कम्पेयर टू यूनिवर्सिटीज. एंड दिस ब्रिंग्स टू फाइनली योर जर्नी एज अ रिमोट सॉफ्टवेयर इंजीनियर. तो आपने जब 4 करोड़ का पैकेज जब फोड़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक इन हैंड इज वे लेस. 4 करोड़ इज जस्ट लाइक अ बिग नंबर टू से. इन हैंड माइट बी अराउंड 2 करोड़ और समथिंग. सो जब आपने फोड़ा, लाइक हाउ डिड यू रियलाइज कि आप इतना नेगोशिएट कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल हम एवरेज स्टूडेंट्स के लिए, मेरे पास खुद US में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो like in 20s इतना फोड़ रहा हो. So who was your inspiration to target that amount and how did you negotiate? Okay, I'll share a few stories here. So before that offer of 4 CR, which is actually 3.5, I mean, 4 CR is just a number you put out, right? Just like something my editor suggested, this is more clickable. But before I got that offer, I was working for a company which was paying me $100K US, which is like 80 lakh rupees. So it was almost a 5x jump for me. And the reason I was comfortable asking for such a raise was, one, मेरी कंपनी में ही the 100K कंपनी जिसमें मैं था, someone sort of asked for this number in the same, and he was basically, he was senior, but वो इसी रोल के लिए अप्लाई कर रहे थे. He asked for 400K. So I realized लोग मांगते तो हैं, मतलब there are people out there who are comfortable enough to ask this number, and my manager sort of told him no, कि नहीं बहुत ज़्यादा है हमारे लिए. But I realized कि ठीक है, मेरे मैनेजर ने मना किया, but there are people out there who are ballsy enough to ask for this number. So it's not a huge number to ask for, ठीक है, मतलब it is a huge number, but people ask for it. So if they're asking for it, they sort of know कि कोई तो पे कर रहा है वहाँ पे. तो मुझे पता लग गया था ये एक सीनियर बंदा है जिसने 400K मांगा है. सेकेंडली, मैंने 100K से, मैंने अपनी ये वीडियो में भी बताया कि when I realized कि मुझे फुल टाइम जॉब कोई ज्वाइन करनी है, and I was leaving that 100K offer, I sort of increased my expectations in chunks. तो मैंने पहली कंपनी में बहुत कंजर्वेटिवली अप्लाई किया था, and I मतलब not, तो मैंने asked for 200K and they sort of gave me 150 cash and 50 stocks का offer. I took that offer and then started negotiating आगे like interviewing very aggressively. थर्ड कंपनी में मैंने 300K बोला, वो भी मुझे मिल गया था. एंड देन चौथी कंपनी में, जो मेरी मेन कंपनी फाइनली दैट आई एंडेड अप जॉइनिंग, दे रिसेंटली रेज 2 राउंड्स. उन्होंने सीरीज A रेज कर ली थी, सीरीज B रेज कर ली थी बहुत तेज़ी से. तो दे हैड अ लॉट ऑफ मनी, दे वर हायरिंग वेरी एग्रेसिवली इन दिस नीश दैट आई वाज गुड एट. एंड मेरी कंपनी में किसी ने 400K मांग लिया था और मेरे पास 300K का ऑलरेडी ऑफर था. तो इन सब चीज़ों को जब तुम मिला दो तो 400K इज़ एन ईजी नंबर टू आस्क फॉर. तो क्योंकि आई हैड अ फॉल बैक, राइट. वर्स्ट केस क्या होगा कि मेरे को 300K लेना पड़ेगा कहीं और. एंड यूजुअली व्हेन यू आर नेगोशिएटिंग, इट्स नेवर अ बाइनरी आउटकम. तुम 400K मांग रहे हो तो ऐसा नहीं होगा वो बोल देंगे हो तुमने इतना कैसे मांग लिया, sorry, we're not pursuing this, you as a candidate anymore. They will revert with 350K, 300K, whatever. So you should be comfortable to ask for a number you think is good for you. And इन सब फैक्टर्स को मिला के what I finally asked them for was 500K. और ये 500K अंदर से रैंडमली निकला था. मैंने सोचा 400 ही था, पर उस टाइम में my friends were starting up. They asked me to sort of join as a co-founder. तो I had a bunch of fallbacks. तो I thought why not? मतलब worst case क्या ही है, I have 2 other places to go to. Let's ask for 500K. And उधर भी they first agreed for 400, 200 cash and 200 stocks. एंड इवेंट आई टोल्ड देम कि नहीं, जब तक 500K मैच नहीं होगी तब तक मैं नहीं ज्वाइन करूँगा. तो इवेंचुअली दे इंक्रीज द स्टॉक्स एंड एडेड अ ज्वाइनिंग बोनस. तो मिला मिलू के दे सॉर्ट ऑफ टच्ड 500K. एंड आफ्टर अ ईयर ऑफ वर्किंग देयर आई फील, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई उसके बाद. रूपी एंडेड अप डिप्रिशिएटिंग बाय अ लॉट, ऑलमोस्ट 10% रूपी गिर गया है पिछले साल से अब तक. एंड सिंस माई सैलरी इन दिस कंपनी वाजंट पेग टू द डॉलर, वो 200K इफेक्टिवली 180K रह गया था. तो
and the US market sort of went crazy उस time पे, but it's a free fall right now and it's hurt startups even more. तो मेरे stock component जो था which was almost 300K or 2 CR साल का, that also is much lesser than was initially promised. तो all in all इन सब चीज़ों को मिला के अंत में I sort of took the decision 2 months ago to leave this company and work elsewhere. So yeah, I think in terms of negotiation, also these things are very market specific also. एक साल पहले market was very different than what it is today. So if I was negotiating today, I'd probably choose a different technique. I mean, I did negotiate 2 months ago when I was sort of interviewing elsewhere. And I think I just got in the door right before this whole thing. Like the current market is really bad. So now I'd probably be a little more cautious when negotiating. But back then was the bull run, and whenever there'll always be bull runs and bear runs. During bull runs are the best time to sort of switch and ask for offers like these. Got it. First of all, I'm like really surprised कि आपने senior manager से उनकी salary का आपको पता भी चला, like for example for junior engineers और even like bit senior engineers उनके लिए पता ही नहीं चलता. एक तो ट्रांसपेरेंसी होती नहीं है पैकेजेस की, हमारे मैनेजर्स ही बोल देते हैं कि डू नॉट आस्क देम, सीधा मुझसे पूछो. और क्योंकि अगर पता चल गया तो वो और मांग लेगा, क्योंकि स्काई इज़ द लिमिट. मैनेजर भी तंग आ जाता है कि ये भी रेज मांग रहा है, तो इस कारण वो बोलते हैं ऑब्वियसली. पर आपको कैसे पता चला, हु इनिशिएटेड एंड हाउ डिड यू गेट टू नो कि आपका सीनियर मैनेजर 400K मांग रहा है? Well, so remote jobs and in startups, people are very casual, I think, compared to big tech. So my manager was the guy who used to decide my comp. तो मेरी उनसे बात होती रहती थी, and he basically told me this other guy who's coming, what do you think about him? मैंने कहा profile looks pretty good. What's the problem? Like, why aren't we interviewing? He said he's asking for too much. 400K is like too much to ask for. So he was like pretty casual with me कि हाँ ये बंदा है, इतने पैसे मांग रहा है, क्या करना है, हायर करना है या नहीं करना. That's how I got it. I don't think this happens in big tech at all. Like I don't think बिल्कुल भी this is a completely different culture. Like मतलब हमारे लिए भाई like ये पता करना ही इतना मुश्किल है बिग टेक कंपनीज में, आपके लिए कैजुअली पता करना is like culture shock for me. Yeah, there are a lot of such cultural shocks in remote companies, I think. जो मतलब इतना अजीब लगता है क्योंकि हमें तो इंडिया में बचपन से सिखाया जाता है कि बचपन से क्या मतलब आफ्टर कॉलेज सिखाया जाता है कि DSA सब कुछ है, एंड इंडिया में X लगता है, US में Y लगता है. ऐसे बहुत सारे मिसकनसेप्शन हैं जो सॉर्ट ऑफ मेरे भी 1 साल में ब्रेक हुए व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग रिमोटली एंड रियलाइज्ड कि वहाँ का मतलब तुम तो वहाँ रहते हो तो मतलब 100K इज़ लाइक वहाँ सबका ही 100K तो होता ही होगा, आई एम अज्यूमिंग US में, राइट? और लाइक 80K 70K टाइप्स तो मतलब बेयर मिनिमम ही है. मतलब बिग टेक कंपनीज के लिए 100K से कम तो आप सोच ही नहीं सकते. जैसी भी मार्केट है, इतना इन्फ्लेशन है, आई कैन प्रॉमिस कि कोई जूनियर इंजीनियर भी स्टार्ट कर रहा है उसका भी 100K से कम है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है मुझे लगता है ऑल ओवर US जितना भी मैंने लोगों से बात की है. तो या 100K इज़ वेरी इजी टू गिव, एंड स्टॉक्स के बाद बिग टेक कंपनीज में ऑब्वियसली ऊपर जाता ही है. Exactly. But big tech companies इतनी बड़ी है ना कि there are a lot of smart people there who know कि India as a country, purchasing power parity as a concept. तो that's why they create back offices in India and then sort of have levels defined कि इस लेवल के बंदा इतना ही मिलेगा, इस लेवल के बंदे को इतना ही मिलेगा. And that changes completely when you're working remotely because वहाँ there's no such concept. कोई यूजुअली मतलब स्टार्टअप्स में जिनमें मैंने अप्लाई किया है उनको पता भी नहीं होता कि इंडिया इज़ अ चीपर कंट्री, या यहाँ पे तो 20,000 में पूरा घर चल जाता है. दे फील लाइक वहाँ पे पीपल स्पेंड $3,000. पीपल आर लिविंग इन न्यूयॉर्क स्पेंडिंग लाइक $3,000-4,000 इज़ वेरी कॉमन टू स्पेंड एज योर मंथली एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग हाउसिंग एंड एवरीथिंग. तो उनको लगता है इंडिया में भी ऐसा ही होता होगा. सो दे डोंट रियली सॉर्ट ऑफ ब्रिंग दैट अप एज अ पॉइंट कि हाँ तुम इंडिया से हो तो तुम कम लो थोड़ा. Got it, makes sense. Another question about remote software engineering jobs. काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि taxes कैसे वर्कआउट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप LinkedIn पे चले जाओ, remote software engineering jobs 100K प्लस सैलरी, काफ़ी जॉब्स में लिखा होता है कि आपको US में काम करने के लिए ऑथराइज होना चाहिए. और ये आपने लिमिटेशन कैसे क्रॉस की, और इसके अलावा हाउ टैक्सेस वर्क? या सो ऑन द फर्स्ट पॉइंट मैंने भी लिंक्डइन में कई बार ये देखा है. मतलब फर्स्टली लिंक्डइन इज माई प्राइमरी प्लेटफॉर्म दैट आई अप्लाई फ्रॉम. आई कोल्ड रीच आउट टू पीपल ऑन ट्विटर, ऑन लिंक्डइन, ऑन गिटहब, एज लाइक नॉट एक्जैक्टली ऑन गिटहब बट गिटहब पे मैं देख लेता हूँ कि दिस इज द पर्सन हु इज सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोजेक्ट, एंड देन आई DM देम ऑन ट्विटर और ऑन ईमेल. तो when you're working in a company so naturally, right, कि हाँ तुम ओपन सोर्स के थ्रू उन तक पहुँचे हो, या फिर यू फाउंड देम, यू स्टार्टेड वर्किंग फॉर देम इवन बिफोर यू जॉइन, तुम थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हो, या फिर लिंक्डइन पे तुम्हारी कुछ एक स्पेसिफिक तुम्हें AI कि ये स्पेसिफिक फील्ड जनरेटिव है बहुत अच्छे से आता है, दैट इज़ अ जनरेटिव AI कंपनी. देन द कॉन्वर्सेशंस हैपन मच मोर नेचुरली. और ये सब बहुत पीछे रह जाता है उसमें कि तुम कहाँ से हो, उनको मतलब पूछते भी नहीं है. उनको एंड तक कई बार पता भी नहीं होता कि मैं US में नहीं रहता हूँ, मैं इंडिया में रहता हूँ. एंड व्हेन आई टेल देम दे लाइक हाँ ठीक है, तुम अपना बैंक अकाउंट नंबर दे देना, हम वायर ट्रांसफर कर देंगे, एज सिंपल एज दैट. तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो
तुम किस लेवल ऑफ कंपनी में काम करो. एज कंपनीज गेट बिगर एंड बिगर देन दे हैव रूल्स कि हाँ वर्क ऑथराइजेशन फलाना धमाका. बट नाउ देर आर कंपनीज लाइक रिमोट विच आर एक्चुअली सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. देर आर टू big companies, remote.com and deal.com, which help companies in the US sort of hire from India using like a very shady mechanism of when I used to work for this last company, I was hired via remote. So I was an employee of remote.com, and that company was a client of remote.com. So that's how this concept works. And this is another way that's made it easy for companies in the US to hire in India. But generally, I would say when you're targeting pre-series A or pre-series B companies, which are like startups, उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता. You send them an invoice, they have you as a contractor, and then they send you a wire transfer. And in terms of taxes, so there are two ways to get hired. Either, as I said, the remote.com route, in which you're a full-time employee of a company in India, and in that case, your taxes work the same as they work in big tech, which is everything above 10 lakh rupees is 30%, and then there are slabs before that. I don't recommend this generally because you can save a lot of money as a freelancer in India, or like if you're billing people as a contractor, and it really doesn't matter तुम्हें क्या sort of label मिला है, full time employee का label मिला है या contractor का label मिला है. And as a contractor, one, your money hits your bank account directly in US dollars. You don't pay taxes on it upfront, even though हर 2-3 महीने में तुम्हें advance tax देना पड़ता है. But at least उन 2-3 महीने you have some extra portion of your salary with yourself. If you're making less than 50 lakh rupees in a year, then you can use this tax law called 44ADA and pay taxes only on 50% of your income, although you have to sort of make sure you're spending the 50% on expenditures which are related to your business. तो वही है कि उसको यूज़ तभी करना अगर तुम 50 लाख में से 25 लाख खर्च रहे हो कहीं और, वरना the government can sort of ask you why you're making 30 lakhs but only paying taxes on 25. And if you're making more than 50 lakhs, then you can basically remove your expenditures from your company and just pay taxes on your net income. And after 1 CR, you can just open a company in Dubai where there are like 0 or 5% taxes. So this is the freedom that you get when you're a contractor. You can basically decide where you want your money to come and then pay taxes accordingly. वाओ, दुबई वाला राउट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. वहाँ पे टैक्सेस नहीं होते. सो या देयर आर मेनी वेज टू मैनेज योर मनी, क्योंकि इतने बड़े पैसे को मैंने भी कभी इमेजिन नहीं किया. सो या दैट कम्प्लीटली मेक्स सेंस. नाउ लेट्स टॉक अगेन अबाउट नेगोशिएटिंग. तो जब आप नेगोशिएट करते हो बिग टेक कंपनीज में, पता कैसे होता है? जैसे कि अगर किसी को 100K फॉर एग्जाम्पल मिली है, हमारे लिए मतलब जैसे मेरी फर्स्ट जॉब थी, मेरे लिए $5,000 ज़्यादा मांगना ही बड़ी बात थी यार. वो कहते हैं कि क्यों दे, मतलब यू हैव टू गिव अ रीज़न. तो आपकी रीजनिंग क्या थी? फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी बड़ी कंपनी में भी 5,000 मांग रहा हूँ, उनके लिए कहते हैं कि मतलब जैसे बड़ी कंपनीज होती हैं, वो कहते हैं वी आर नॉट निगोशियबल. आप छोटी कंपनी से आ रहे हो, आपको बड़ी कंपनी का नाम दे रहे हैं, हमारा नाम बड़ा है. सो लाइक दे टेल यू दीज रीजन, दे आर वेरी वेरी लाइक टेलिंग यू दैट हम नॉट निगोशियबल है. तो हाउ डिड यू सरपास दैट लेवल? Yeah, I think big companies में there are HRs, right, who are very good at this. Like उन्होंने ये सब पढ़ा होता है in college to you know how to negotiate and how to get the best offer. A lot of times there are incentives for HRs कि तुम इस बंदे को 150K पे ले आओगे तो हम तुम्हें $5,000 दे देंगे, अगर तुम इसको 170 पे ले आओगे तो 2,000 दे देंगे. तो they have very big incentives to sort of get you for the lowest offer possible, and that's why it's very hard to negotiate. I was interviewing for this company in Singapore and मेरा हो गया तो अंत में दिस वाज व्हेन आई वाज एट गोल्डमैन. सो आई वाज मेकिंग 30 एट गोल्डमैन एंड दे ऑफर्ड मी समवेयर लाइक 45 इंडियन रुपीज़ में. तो आई आस्क्ड देम कि ये तो सेंस ही नहीं बनाता बिकॉज सिंगापुर इज़ अ मच मोर एक्सपेंसिव एज अ कंट्री. तो दे सेड कि हम आपको सिंगापुर बुला रहे हैं, वही सेम मतलब कि हाँ दैट इज़ अ, या फिर गूगल मैसेज जाएगा तुम गूगल आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं दे हैव दिस बेनिफिट ऑफ सॉर्ट ऑफ कि बिकॉज दे मूविंग यू टू सिंगापुर दे कैन नेगोशिएट बेटर. द थिंग अबाउट रिमोट जॉब्स इज there's no such upside. There's no big company that you're working. You're not getting a big company title. They're not moving you to the US or to the Europe or to some fancy location. So in that case, you sort of get the upside of, do you want to hire me? And if you want to hire me, X is my price. Also, you're not negotiating usually with the HR. You're negotiating most probably directly with your client, which is like the CTO, CEO of the company, or like some manager that you'll be working under. So that also makes it a little, because these people are like you and me, who are like working tech jobs on a day-to-day basis. तो इनको इतना घुसने का मन नहीं होता इस समय. They are not negotiators. तो they sort of are, as long as you don't ask for more than what the CEO is making itself. तुम कोई बहुत ही बड़ा मांग लोगे तो पता नहीं मुझे. But if you're staying humble and negotiating with this guy, it's easier to do than to negotiate with an HR. And there's one more point. Yeah, one thing in remote jobs is कि
it's very casual, like no strings attached, so they can always hire you for a month. तुम बोलो मैं तो इतना ही लूँगा, बट एक महीना ट्राई कर लो, अच्छा नहीं लगा तो निकाल देना. तो ये बहुत कॉमनली मैंने तो किया है, एटलीस्ट आई ऑलवेज ऑफर दिस कि हाँ तुम एक, मैं बोलता हूँ 15 दिन ट्राई करो, अच्छा नहीं लगा 15 दिन के भी पैसे मत देना. तो इस तरीके से मैंने इनिशियली बहुत ज़्यादा अपने क्लाइंट्स को ढूंढा था, और ऐसा होता था 15 दिन बाद ऐसा उनको ऐसा होता था कि हाँ अब तुम तो रहो ही और बताओ और कितने पैसे चाहिए. तो बिकॉज यू गिव देम अ ट्रायल पीरियड, तो दे आर ऑल्सो मच मोर कंफर्टेबल. तुमको बोल दो 15 दिन कुछ मत देना अगर मैं अच्छा नहीं लगा, पर अच्छा लगा तो और भी दे देना. तो इस तरीके से नेगोशिएट भी कर सकते हो. ये सारी टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें तुम कर सकते हो इन रिमोट जॉब. या ए सिंपल एग्जांपल कुड बी रिफंड पॉलिसी. जिन प्रोडक्ट्स में रिफंड पॉलिसी होती है वो बंदा स्ट्रेस फ्री ऑर्डर कर देता है, जिनमें नहीं होती वो कहता है ऑर्डर करो, 10 बार सोचता है, वो डिसीजन ही नहीं ले पाता. सो दे वर एबल टू मेक अ डिसीजन बिकॉज आपने एक रिफंड पॉलिसी दे दी कि यार 15 दिन के पैसे दो, बाद में जाने दो, और यू वर गुड एट योर स्किल एंड आपने वो स्किल ढूंढी. विच पोजीशन वर यू इन लाइक Web3 ब्लॉकचेन, कौन सी पोजीशन थी आपकी? Before this, it was basically real-time communication. So like a lot of gaming companies sort of need data to go through in real time from one place to the other, or video and audio. So initially it was that. Now it's Web3. Like now I work in a Web3 company. So I think that also sort of matters. Because actually I think AI and Web3 are two companies which are very heavily funded. So and also there's not a lot of talent who understands these as concepts very well. तो पैसा बहुत ज़्यादा, टैलेंट बहुत कम है, सो सॉर्ट ऑफ यू कैन मेक मोर मनी देयर. ट्रू. AI एक ऐसी चीज़ है, मैंने इतनी AI की स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस ली, मशीन लर्निंग इतना ज़्यादा रिग्रेस होता है, आपको स्टैट्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए. सो इफ़ यू कैन टेल, जो आपने रिमोट सॉफ्टवेयर जॉब्स थी, हमने क्या क्या प्रैक्टिस किया, क्या क्या स्किल रिक्वायर्ड थी? बिकॉज इन टर्म्स ऑफ AI एंड Web3 काफ़ी बच्चों को आइडिया नहीं है कि कैसे प्रिपेयर करते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू. लाइक उन्हें पता नहीं इंटरव्यू क्या होगा. कोडिंग का सबको पता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का DSA कर लो, पर Web3 के लिए क्या क्या नॉलेज चाहिए, नो वन रियली नोज मच. इफ़ यू कैन शेयर. Sure. So before this, the niche that I was in was, as I said, real-time communication. तो उसमें ऐसा था कि there are 2-3 very famous GitHub projects, and I think that the same applies to AI and ML as well. So I started contributing to those projects. I started making forks of those projects. I started making libraries on top of those projects. That got me sort of famous in this industry कि हाँ इस बंदे को real-time communication के बारे में काफ़ी आता है. And as I said, these are niche fields. बहुत ज़्यादा लोग ये सब नहीं कर रहे होते. तो whenever there's a company that's funded for real-time communication, उनको जल्दी से हायर करना होगा किसी एक्सपर्ट को इस फील्ड में. तो they used to search and they used to reach my profile. So that's how I got a lot of inbound. And specifically for Web3, I sort of 6 months ago started diving into the field. And very basic thing there is to, again, there are open source projects out there that you can contribute to. There are libraries that are built to basically make it easy to sort of interact with the blockchain. So I wrote a few smart contracts, and my interview also was, again, this interview was very chill. The company for which I'm working right now, which was like I started contributing to their project, and they reached out, and sort of very naturally I sort of got in. So I think when remote jobs में and in niche technologies में, your skill matters a lot. So DSA कोई नहीं पूछेगा और कुछ भी कोई नहीं पूछेगा. Just contributing to a specific project that has very high demand can get you in the door. Got it. So आपने ओपन सोर्स डेवलपमेंट की, आप उन गिटहब प्रोजेक्ट्स में ओपन सोर्स पे गए. जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आप लाइक इफ़ यू कैन टेल मी, इफ़ यू कैन वॉक मी थ्रू द प्रोसेस. फॉर एग्जांपल मैं अगर डेवलपर हूँ, मैं कैसे करूँगा आपको बता सकता हूँ. मैं सर्च करूँगा गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, वहाँ पर प्रोजेक्ट्स की लिस्ट में जाऊँगा, एक प्रोजेक्ट पकड़ूंगा, उस पर कॉन्ट्रीब्यूट करूँगा, वो फोक करके अपनी प्रोफाइल में डाल दूंगा, एंड वो क्लिक करके मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन दिख जाएंगी. आपने भी शायद सिमिलर किया, राइट? Yeah, very similar. So I realized WebSockets are a protocol that sort of I use for two-way communication. So that's something you'd need. A lot of companies use to do real-time communication in things like games or like chat applications. So first I built at the application level, use the protocol to build a few things, and then sort of started diving into the protocol itself. So there is a WebSocket implementation in Node.js. There's a WebSocket implementation in Python, and these are all on GitHub. So you can just go there, read the RFCs for these protocols, and implement features that are not yet. What is RFC? Sorry. So RFCs are basically a doc where the protocol is defined by whoever has written the protocol, which on the internet protocol is like IETF, I think. Let me just confirm that. Yeah, IETF sort of writes protocols for कि हाँ अगर तुम browser हो और तुम्हें WebSockets को support करना है as a protocol, this is how the protocol is written. And then browsers sort of go through it and sort of write the code to build that protocol inside the browser. So if there's a specification for HTML का ये वाला जो tag है, ये ऐसा रेंडर करना चाहिए ब्राउजर में, IETF will write that in a doc, and then Google Chrome, Firefox, these companies have to sort of implement
it as is in their browser code. So for WebSocket specifically, there's a WebSocket protocol, RFC, कि WebSocket as a protocol should work like this. And then there are a bunch of libraries कि जिसको C++ में WebSocket का एक्सटेंडेड करना है वो ऐसे लिखो. Python की एक ये लाइब्रेरी है. Node.js की ये 10 लाइब्रेरीज हैं, एक भी नहीं, मतलब देयर आर काउंटलेस लाइब्रेरीज हु दैट इम्प्लीमेंट द प्रोटोकॉल एंड देन यू कैन कंट्रीब्यूट टू दैट लाइब्रेरी. मोस्ट प्रॉब्ली द सोर्स कोड इज ऑन GitHub or some other version of Git. So you can basically look at the code, and if there are most probably issues open कि हाँ ये चीज़ मिसिंग है इसमें या फिर ये बग है, you can fix them and go from there. Got it. That makes sense. So basically some rules जिससे आप contribute कर सकते हो in layman terms, और वो आपने पढ़े अच्छे से go through किए and then आपने contribute करना शुरू किया, right? Yes, more or less. Now, can you share how do you get opportunities through GitHub? हर एक को LinkedIn, Twitter तो पता चल गया है, but GitHub से कैसे? Like GitHub पे भी social media आ गया है? Usually not. तो मैं, this is a funny story. Whenever I want to sort of get into a company, which let's say there's an open source company, I start contributing to that company. And then there's this company I was contributing to. I realized, like, after making a lot of contributions, that there's probably no way for them to reach me because मेरे GitHub पे कुछ लिखा, even my email is not there, nothing is there. So I sort of put my Twitter profile there specifically for this company. Whenever they want to reach out, if they want to reach out, they will. And that's exactly what happened. I put my Twitter there, and 2 days after, they reached out to me on Twitter, like thanked me for the contributions and asked if I was open for a full-time role. So that's one way they can reach you. Also, a lot of times these open source projects have Discords or IRCs where you can talk to the contributors and ask questions if you're trying to contribute. So there also they can sort of reach out to you. Personally, for me, it happened on Twitter. Like, I was contributing on GitHub. I put my Twitter on my GitHub profile, and then they reached out to me through that. Brilliant. So you have to give your information. ऐसे नहीं randomly contribute कर देते हो. You have to open a way कि वो आपको reach out कर पाएं. And अगर आप उसमें अच्छा free में contribute कर रहे हो तो company को भी पता है कि आप अगर full time employee बन गए तो आप और फोड़ दोगे वहाँ पे जाके. So that makes sense. So that pretty much clarifies me about remote software engineering jobs. एक flow काफ़ी different होता है, negotiation भी काफ़ी different होता है. Now coming back to the IIT's topic.